Sir is sitting in my place. Sir, tell him to sit here. You are sitting here. Don't do like a small thing. Sir, can I just give it in Yes, go fast. Please settle down fast. Yes, sir. Please. Periodic table, periodic. Please settle down. Everybody. Yes, go fast and come back. The periodic properties that we had started. This was already discussed, na? Atomic size. Periodic properties. Yes, sir. Periodic properties. No, that marker is not visible. Can you use another one? Yes, sure. Periodic properties. No, it is visible. Periodic properties. We had studied about first property, that was atomic and ionic size. Atomic and ionic size. What we had studied about this atomic and ionic size regarding trend from across the period and in group from top to bottom. Correct? Yes, sir. Here, left to right. Atomic or ionic size is the size of that atom from nucleus to outermost shell, that distance in atomic condition, in elemental condition. If that molecule is in a diatomic molecule or having bond between them, then it is half of the bond length. So across the period, left to right, atomic and ionic size increases. Yes? No? Decreases. Decreases. It is decreases. And top to bottom, obviously it is increases. Two factors. Please go down. Sir, we are checking if they have signed up. If you compare the concepts, two concepts are there. Here, nuclear charge, and another is its size, atomic size. So here, left to right, as you go left to right, nuclear charge increases. Nuclear charge increases. So if the nuclear charge get increased, then there is a more attraction between the outermost shell and the nucleus. As we go from left to right, what happens? The atomic number increases by 1 unit. Same way proton increases, but the number of shells remains same. And due to that outermost shell and nucleus, the attraction is more, resulting contraction in size. That's why size get decreases. Talking about top to bottom, the shells are increases at every new element. Right? Yes, sir. And due to that, obviously size get increases because distance from nucleus to outermost shell increases. But sir, in an atomic size graph, many elements have some higher than the other. If you're checking the graph of the atomic size from across a period, then it is getting decreased, but some are getting increased also. Yes, they have some anomalous behavior.
That is because of and it always happens with the first element of that particular group. First element of that particular group. Means if you take boron, then here this is 13 group, 14 group carbon, 15 nitrogen, 16 oxygen, 17 fluorine, and here neon. So here, if you observe the atomic size of these elements, then you will find little variation. Yes. Means ups and down. That is because of the first element of each element. First element of each group shows anomalous behavior. Anomalous behavior. Now, what is anomalous behavior? They will not follow the trend. Means the rest of them follow the trend. Means none of you sit on first bench. Right? Yes. Because you know that first bench student अलग होता है. Yes, sir. वो अलग होता है सबसे. Mentality वैसे element में. First element from the group has anomalous behavior. अलग विचित्र बोलते हैं उसको. Right? So अलग होता है. वो कम भी बताएगा, ज्यादा भी बताएगा. Not fixed. वो trend नहीं follow करेगा. That's why, and it is only possible in first element of each group. Second, third, then trend will be false. Okay, that your doubt is right. Then we had studied isoelectronic concept in that previously. Isoelectronic concept, if the element has same number of electron, then the element which has more minus charge has larger size, the element which has positive charge has smaller size, right? ये सब देखा है हमने, इसको शॉर्ट डिवीजन में मैंने बता दिया आपको. Now talking about the next property, that is metallic and non-metallic property. Metallic and non-metallic property. Close. Pay attention to what. Yes. Now, what is a metallic property? When we say the particular element is a good metal, or metals are where it is situated in a periodic table. In periodic table, they are situated at left. Left side. Extreme left. And non-metals are extreme Right. right. Now, metallic property is also called as electropositive character. Electropositive element or character, you can say. Anyway, electropositive element. And what will be the electropositive element? The element which gives electron easily. Yes, sir. Easily gives electron. Easily gives electron. They are metals. They are metals. For example, sodium, atomic number 11. Yes, sir. It gives one electron easily and attain nearest to noble gas electronic configuration, that is 10 electron, which is of neon, and it acquires stability. While in case of non-metal, it is little reverse. ये क्या करेगा? It accept the electron. It accept the electron. So it easily accept the electron. Easily accepts the electrons. Chlorine 17, it accepts one electron and it becomes Cl minus, that is 18 electron, which is argon. Right? Clear? Yes, sir. So metallic property have a trend left to right. Decreases. Left to right. It is decreases. Left to right, it is always decreases. Now, why it is decreases? So because the element then start accepting rather than giving. Decreases. And top to bottom, So increases. Increases. it is increases. Increases. Right? Yes, sir. Yes, sir. Left to right, the tendency to give electron get Decreases. decreases. Reason? Sir, because
I told each has two factors. One is size, another is nuclear charge. So which thing predominant here that will affect this thing? Nuclear charge. Means sign it afterward. Sign it afterward. Okay. Talking about this left to right, it get decreases. Why it get decreases? Because left to right size get decreases. If size get decreases, if size is decreasing, try to understand. If size get decreasing, if size decreases, which has more force of attraction between the nucleus and electron? Smaller size or larger size? Smaller size. That's why it is very difficult to lose the electron. It means basicity get decreases. That is metallic character decreases. Clear? Understanding? So which factor predominant here? Nuclear charge as well as size both. Next, top to bottom. Because size is increasing. Yes, size increases. Last electron one can easily remove. Yes. Because the attraction between nucleus and outermost shell is very, very less. So it can remove, increase. Yes. Now what we have to do here? What will be the trend here? Sir, left to right increases. Left to right? Increases left to right. Increases. Increases and top to bottom? Decreases. I will tell you what you have to do. Once this understood. This understood? Yes, sir. Very well. Yes, sir. What is the opposite of metal? Non-metal. What is opposite of this? No. Sir, Decreases can increases and increases can decreases. That's it. No need to give much more stress that. एक अच्छे से करो, दूसरा automatic आ जाए. Now justify this. Left to right increases non-metallic character. Yes. Why it is increases? Sir, because of the nuclear charge and size. Nuclear Yes. charge, the power is increasing. Because as the size get decreases, Yes, sir. attraction of a nucleus on electron is more. So once any electron come in nearby that nucleus, immediately it get abstracted. Immediately it get abstracted. Yes. That's why non-metallic character get increases. Increases. Talking about top to bottom. Sir, Again here size, small size easily attraction and larger size less attraction. That's why it get decreases. So this is about metallic and non-metallic characters. Any doubt in this? No, sir. Few elements, second period elements are there. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Fluorine also, sir. Noble gas. Fluorine, correct, fluorine. Yes, sir. Sir, decreases. Metals. Which is most metallic in this? Lithium. Lithium is most metallic. Yes, alkali metal. Which is the least metallic? Fluorine. Fluorine. Which is more non-metallic? Fluorine. More non-metallic. More non-metallic. देखो एक ही कंसेप्ट है, बुक वाले कंफ्यूज करके रखा आप लोगों. Yes, sir. हाँ, एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखो. Left to right metallic character decreases. Most metallic lithium, least metallic fluorine. बस opposite क्या आएगा? Non-metallic. Most non-metallic fluorine. Least non-metallic lithium. In this period, not overall periodic table. Not overall periodic table. Talking about overall periodic table, the most electropositive element. Most metallic is The lithium. most electropositive, please close the book, pay attention here, apply the logic, you will get the answer.
100% attention towards me. Afterward, after completion of lecture, you can read whole night, whole day. Clear? Sir, he's studying whole year. Pay attention. What is the question asked? Which element is highly metallic in nature? Hydrogen. No. Yeah. Sir, in your two or other? All periodic table. Yeah. See the logic, देखो ना, see the logic. Left to right, metallic character decreases, means ये least metallic है, तो most metallic इधर का रहेगा. Top to bottom metallic character increases, मतलब ये bottom में रहेगा. Bottom में कौन सा? First group में bottom में है francium, but it is radioactive element. That's why it is not considered. इससे पहले वाला cesium is considered. Cesium is most electropositive element in periodic table. Got it? दूसरा question. Most electronegative element in periodic table. Fluorine. Fluorine is correct. Yes, Swastika, you are right. Fluorine is correct. Yes. Not chlorine. How fluorine? Sir, It is the first of 17 group element. Why we are not taking the 18 group elements? Sir, they are noble characters. They have real nobility. Reaction ही नहीं होगा. That's it. हो गया clear? Yes, sir. अच्छा. अब एक दो बात और बताऊंगा मैं. Sir, can I take a picture of this photo? Can I take a picture of this photo? I think the video will be available on YouTube. Na? You can website पे हाँ. You can take that time. Next is, do you know that oxides of metal are basic in nature? Oxides of metal are basic in nature, and oxides of non-metal acidic in nature. Acidic means red to blue, blue to red. And basic means red to blue. Clear? So in this lithium के बाद beryllium, then boron, then carbon, nitrogen, oxygen, chlorine. If we make oxides of this, lithium oxide, beryllium oxide, boron oxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, oxygen का तो कोई oxide, ozone, क्यों नहीं आएगा? खुद से combine कर दो. And इसका F2O, right? Which is most acidic oxide in this? F2O. Which is most basic oxide in this? I like, yeah. Right? Clear way? Acidic and basic. तो ये भी याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है. Then group 14, carbon, silicon, germanium. Sn is what? It is stannous, it is tin, and it is lead. Yes, sir. Non-metal, Metalloid. metalloids, And then metal. and then metals. What do you observe from this trends top to bottom? Metallic character, non-metallic character, got it? Now one more thing that I want to tell you about metal and non-metal. Have you traveled anywhere in vacation? Yes, sir. Yes.
So nowadays we are booking online with mobile or the laptop easily. But still, if we have urgency, we will go to the traveling agent, right? Oxidation and reduction. Do you know about oxidation and reduction? क्या पता है oxidation? What is the meaning of oxidation? Generally, we know that addition of oxygen, removal of hydrogen is oxidation, and opposite is reduction. Yes. Now, loss of electron is oxidation. Loss of electron is oxidation. If I say sodium metal loses one electron, sodium metal loses one electron, then sodium is Sodium gets oxidized. sodium undergoes oxidation. Sodium undergoes oxidation. And the element which undergoes oxidation is known as reducing agent. Is known as Reducing agent. may have some confusion, I will clear it. चलो ये पहले कंप्लीट करते हैं. ट्रैवलिंग एजेंट क्या करता है? टिकट बुक करता है. ट्रैवलिंग एजेंट क्या करता है? टिकट बुक. ट्रैवलिंग एजेंट खुद ट्रैवल करता है क्या? नहीं सर. कौन ट्रैवल करता है? जिसका टिकट बुक किया पैसेंजर ट्रक. रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिडक्शन करेगा क्या? नहीं सर. तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. एजेंट कभी खुद वही चीज नहीं करता. मतलब ट्रैवलिंग एजेंट कभी खुद ट्रैवल नहीं करता. रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट. ये लॉजिक याद रखें हमेशा. तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दैट एलिमेंट इज रिड्यूसिंग एजेंट. अपोजिट अगर रिडक्शन हो रहा है तो दैट एलिमेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन. फ्लोरीन एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम F माइनस. सो इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन. इट इज इलेक्ट्रॉन. gain of electron. So ये क्या हो जाएगा? Oxidizing agent. So can we make a general statement that metal are good reducing agent Yes sir. and non-metals are? Oxidizing agent. That's it. That's why these elements like Al, AlH4, lithium aluminium hydride, NaDH4 या फिर lithium in ammonia, ऐसे जो है एलिमेंट्स मेटल्स के, ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया? ठीक है. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज I think melting point and boiling point. One more question that I want to ask you. Suppose we have Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O. Which is most basic in nature? Which is most basic in nature? I ask, repeat. Sir, cesium. CS2. अगर मैं क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूँ इसका मतलब आप गलत है. ट्रेंड्स दिमाग में रखो. बेसिसिटी इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम. सिंपल. आपने खुद बताया. मोस्ट बेसिक इज CS2. क्लियर? भूलना नहीं. इजी है, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया तो नेगेटिव में चले जाओगे. Go towards positive way. Chemical reactivity. Next concept, chemical reactivity है इसी में. Chemical reactivity. Now what do you mean by chemical reactivity? देखो दो चीजें होती हैं. कब कोई रिएक्टिव होता है? दो एग्जांपल देता हूँ. 2 example I will give. I will give 2 example. एकदम easy.
डेली लाइफ एग्जाम्पल, भूख लगी है, घर पे हो, कुछ नहीं बनाया मम्मी ने, what will be your reaction? पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं, you don't have anything, कुछ नहीं, घर उठा दोगे, पूरा घर उठा दोगे सर पे, that is your reaction. another condition, बहुत ज्यादा खा लिया, रात में नींद नहीं आएगी, that is also reaction. Means if element has more than the octet electron or less than the octet electron, it will try to attain nearest noble gas electronic configuration. So that time either it lose the electron or either gain the electron. Can we say that if the element is negatively or positively charged, it is reactive? So element either lose or gain electron, shows a reactivity. Tell me reactivity in a left to right and top to bottom. दो ही ट्रेंड रहेंगे हमेशा across the period and in the group. Left to right reactivity get increases, नहीं, decreases up to group 14, up to group 14, then again increases up to 70. याद रखना, up to group 14 क्या होगा? डिक्रीज होगा रिएक्टिविटी. क्यों डिक्रीज होगा? Valency, and here increases, easily accept the electron to complete the octet. What about top to bottom? It is obviously increases. It is increases. Which is strongest acid? HI. Which is strongest acid? Which is more reactive acid? HI. अरे reactivity increase आप खुद बोल रहे हो top to bottom. एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं आपको, यही है, ये अप्लाई करना है. See, theories are strong, but application is difficult. It's an exception. It should be NCL. No, HI. But check it. It is HI. Yes, you can check it. It is HI. Confirm 100%. गलत नहीं बताऊंगा बच्चा, मैं कुछ भी गलत नहीं. Okay. Then melting point and boiling point. Okay. ये और दो एक एलिमेंट थे, इसके बारे में बताओ. चलो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. रिएक्टिविटी बताओ, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव कौन रहेगा? सोडियम. इंक्रीजेस. क्लियर? रिएक्टिविटी गेट इंक्रीजेस. यहाँ पे इंटरमीडिएट रहेगी और इधर रिएक्टिविटी Again increases. Very good. Again increases. Good. Right? इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज है, इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज है. मिडिल कौन है? 14 ग्रुप एलिमेंट. समझो ये चीज. So, what is the reactivity? Whose reactivity is greater, Na or Cl? Sodium or? Both are equal reactive. You cannot compare like this. See, this will lose one electron, noble gas. This will get one electron, Noble gas. but comparatively, as per their state, sodium is most reactive. Comparatively, between these two, if you compare two elements, definitely sodium is more reactive. थोड़ा सा ले लो, पानी में डालो, रिएक्शन हो जाए. बस थोड़ा सा लेके एटमॉस्फेयर में रखो, इमीडिएटली कैच कर द फायर.
थोड़ा सा अल्कोहल ड्रॉप डालो, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इमीडिएटली रिएक्शन होता है, इमीडिएटली। जैसा क्लोरीन का नहीं, क्लोरीन थोड़ा उससे कम है, बट इट इज ऑल्सो रिएक्ट, इट इज ऑल्सो रिएक्ट। ठीक है, हो गया क्लियर डाउट? नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। छोटा कंसेप्ट है एक और, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? Yes. Melting point is the highest temperature to Melting point is the temperature at which solid get melt or changes into liquid, and boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to its atmospheric pressure. That is boiling point. Left to right. In metal, first metal वाला case, non metal का opposite कर देना बस। metal वाला case, metal वाले में left to right क्या होगा? Sir, decreases. It get simply decreases, and top to bottom Increases. top to bottom also decreases. Sir, it should increase. Decreases. ये वाला तो पहले वाला गलत बताया शायद। sorry, Sorry, increase sir, होगा। increase होगा, Left to right increases, and top to bottom decreases. Top to bottom decreases. Left to right increase then decrease, increase and then decrease. वो ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड। तो पहले क्या होगा? इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होगा। अब ये क्यों होता है? और टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज होगा। मींस अगर ये एलिमेंट ले लिए, टॉप टू बॉटम वाली केस देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। जबकि नॉर्मल केस में क्या होता है कि जैसे एटम्स का साइज बढ़ेगा या एटम्स का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? नो, एनोमलस बिहेवियर पहला एलिमेंट बता दो, पूरा ट्रेंड नहीं बताएगा। Here the concept is attraction between nucleus and electron. Metal contain the metallic bond. Metal contain the metallic bond. What is metallic bond? Metal and electron. Metal and electron. Metals are embedded. Metal ions are embedded in electron. तो वो अट्रैक्शन स्मॉल साइज में ज्यादा रहेगा और लार्जर साइज में कम रहेगा, इसलिए इसको आप मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको कम लगेगी। दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजेस। वही चीज यहाँ पे भी रेफर होगी लेफ्ट टू राइट में। इनिशियली ये अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा ये कम हो जाएगा, फिर और दूर जाएगा ये कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज डिक्रीज होगा। क्लियर? नॉन मेटल में रिवर्स कर लो। यस, और टॉप टू बॉटम increases. बस। What about density? Density. Density is directly proportional to mass. Mass बढ़ रहा है तो density बढ़ेगी। Left to right mass बढ़ रहा है। Yes, तो density बढ़ेगी। Top to bottom mass बढ़ रहा है। Yes, तो density बढ़ेगी। So density both way it is increasing. देखो छोटे छोटे कंसेप्ट है, बार बार रिवाइज करना तो आएंगे, नहीं तो भूल जाओ। Next important concept, IE, very important for JEE or all competitive exam. डबल ट्रिपल स्टार कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है IE? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर इसको बोलते हैं एनर्जी, या फिर बोलते हैं एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? ध्यान से देखना। अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, any element in its neutral condition, which condition? Neutral. And in gaseous condition, ये भी एक condition, gaseous state में होना चाहिए,
गैसियस स्टेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना है। I have to remove this electron, outermost electron. तो क्या ये इजीली निकल जाएगा? No, sir. क्या लगेगा मुझे? एनर्जी लगेगी. That energy is ionization, potential ionization energy. क्यों? Because ये निकालने के बाद मीन्स सोडियम में से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ तो सोडियम क्या बनेगा? आयन. कौन सा आयन? पॉजिटिव आयन. तो ये हो गई आयोनाइजेशन पोटेंशियल. ये होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल में ये मेजर करेंगे. ये मेजर कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल. सर एक कुछ नहीं पढ़ लो पहले, देखेंगे बाद में. नहीं सर वो निकालने का इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये यूनिट है, यूनिट ध्यान में रखना. कैलकुलेशन के लिए नहीं पूछेंगे, डिस्कस या डिस्क्राइब ऐसे पूछेंगे. अब मुझे बताओ आप लोग, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम क्या होगा ट्रेंड? Left to right decrease, top to bottom. Sorry, left to right increase, top to देखो ना, कुछ भी है इसमें. top to डिग्री bottom. लिख दो, डिग्री. Sir, left to right increase. साइलेंट दिमाग रख के शांति से अच्छे से कंसेप्ट को दिमाग में रख के लॉजिक लगा के कॉन्फिडेंटली इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है. Left to right increase. Left side nuclear charge is increasing, so more so it decreases left to right and increases top to bottom. Yes. Left to लेफ्ट right. टू राइट इट इज Decreases top to bottom. डिक्रीजेस. No, Increases left to right. left to right more energy is required. So increases. Left to right increases. That What increases. increases? Left to right increases. यस स्वास्तिका. Sir, since like left to right, the metallic character decreases. So an ionization enthalpy is the energy released for an electron to get removed. So it's not getting removed easily, so more energy will be released. So it is increases and top to bottom it is decreases. अब ये क्यों होता है? It is because of the size. The factor is again size. Small size and larger. Sorry, इधर larger size रहेगा and here smaller size. So smaller size में attraction ज्यादा होने की वजह से ज्यादा एनर्जी लगेगी and here less energy. What about here? Here again size. Larger size, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम रहेगा, इजीली निकाल लेगा, तो टॉप वाले को ज्यादा एनर्जी रहेगी. So if you compare between this element, lithium, sodium, which one has more ionization energy? Sir, lithium. Lithium. Which one has cesium? Cesium and least. Least. Talking about this element, group 2 element. Group 2 में सबसे ज्यादा किसका रहेगा? सबसे first. सर सबसे ज्यादा lithium. Fluorine. Fluorine का रहेगा ना, क्योंकि वो Third period. Second period. Sorry, second period. Second. Fluorine. ठीक है? Some examples are given here. We'll discuss this. वैल्यूज देखना है इसका. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. 520, 899, 801, 1088, 1402, 1314, 1681, 1080. Here star is made for beryllium and nitrogen. Talking about hydrogen, lithium, sodium, strontium, their values are 1312, 520, 498, 419, 403. Sir, what is this 528? It is energy in kilojoule per mole. It is IE, first IE. ठीक है? So where come an exam?
एग्जाम देखो अभी ध्यान से देखो, अब पूछते क्या है, the values of ionization, first ionization values of the elements are as follows. Justify your answer or comment on it. क्यों होता है? तो ऐसे वैल्यूज दे देंगे आपको, 3 दे देंगे या 4 वैल्यू दे देंगे, यहाँ तक दे देंगे, हो सकता है कि इतना दे दे, फिर इतना दे दे, कोई भी ग्रुप बना के दे देंगे और कमेंट करना। तो ऐसा क्यों होता है? तो लेफ्ट टू राइट, व्हाट ट्रेंड्स यू आर ऑब्जर्विंग हियर? लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना? Yes, sir. Increases, right? Now look at here, 520, then it is increases, then decreases little, then again increases, फिर एक बार यहाँ पे Because they are decrease, the first. फिर डिक्रीज हुआ, फिर ट्रेंड फॉलो हुआ। तो ये दो एलिमेंट में ऐसा क्या होता है कि ये थोड़ा अलग बताते हैं। Enabled behavior of the नहीं नहीं नहीं, हर बड़ा एनाबल बिहेवियर में फर्स्ट ईयर try to understand here the orbital electronic configuration plays important role as beryllium is atomic number 4. Here 3 it is 4, the electronic configuration 1s2 2s2. Nitrogen is a 7, electronic configuration 1s2 2s2 2p3. अभी ये थोड़ा एडवांस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन इसको समझो, यही एक्सप्लेनेशन है, उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ब्लाइंडली समझना। देखो ध्यान से, whenever the electrons, what is ionization enthalpy? इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 2s1, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में इजीली निकाल लेंगे आप, 1 है सिंगल है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, that electron are in orbital paired, pair, तो पेयर को ब्रेक करने के लिए एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा लगेगा। अब आप बोलेंगे सर फिर इधर क्यों कम लग रहा है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसका बन जाता है 2p1, तो वो सिंगल है, निकाल लेंगे, तो एज कंपेयर टू दिस इसको थोड़ा कम लगेगा। देन अगेन हियर इट इज p3, now p orbital has 3 suborbitals. So P has 1, 2, 3. In orbitals, stability, whenever the orbital is either empty, either half filled or either full filled. What I said? Orbital is empty, half filled or full filled. That time it possesses extra stability. So ये half filled है, ये extra stable है। अब इसकी स्टेबिलिटी आप डिस्टर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ऑब्वियसली इससे आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी, क्योंकि इनकी आपको स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, ये रीजन। और इसमें फिर कम क्यों लगेगी? क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो कम लगेगी, ये रीजन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, इसलिए ये 2 स्टार बना के दिए स्पेशल केस। देन टॉप टू बॉटम दिखी रहा है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। Most ionization enthalpy, which element? मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी हो सकती है? आपके पास फ्रेंड है, that is helium, the value is 2372 kilojoule per mole. Least cesium, देखो हेलियम क्यों? क्या न्यूट्रल का इधर कुछ बोला ही नहीं ना? So because of electronegativity increases and please, I have one request. One of you, please say this. Continuously talking and discussing all the time. It is a request. Okay, whenever you have doubt, that time only talk. Please clear this. Sir, can you repeat this? Which one?
The helium and francium one. Huh? This The one? helium part, yeah, this one. Helium, I forgot to explain this. Helium, electronic configuration 2. One has 2. एक ही orbital है, and one orbital has 2 electron. And size is nucleus and 2 electron here. The force of attraction of nucleus and 2 electron is maximum, highest extent. Yes, sir. That's why it is very difficult to do. That's why the value is high. We know that left to right size decreases. Size कम है इसका. कम size है, छोटा molecule है. और pairing में भी है electron. तो pairing में से electron वैसे भी निकालना मुश्किल है. तो ये सबसे ज़्यादा है. Cesium में top to bottom size बढ़ रहा है. Last में electron तो निकाल लेंगे आप. कम energy लेंगे. Yes. ये reason. The next concept. Affinity, opposite of this. Ionization enthalpy समझ में आपको? Yes, sir. इसमें एक और मैं छोटा सा कंसेप्ट ऐड करूंगा, शायद आपके काम आ सकता है कि कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है हमारे पास, एल्यूमिनियम. तो एल्यूमिनियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Al प्लस इलेक्ट्रॉन, तो ये मेरी हो जाएगी IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अगेन अब मैं क्या कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा +2, ये होगी IE2. एल्यूमिनियम 2 प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन मैं निकाल लूंगा, तो दैट इट बिकम एल्यूमिनियम 3 प्लस IE3. Now my question is, which value will be larger? IE3 will be larger or IE1 will be larger? Sir, IE1 will be larger. IE1. will be larger. IE1 will be larger. Sure. Yes, sir. Think again. I3 would be because the Why? ionization energy would be required because one electron is removed. So to remove another element, we need more energy to remove. Once one electron is removed, it become cation. Once it become cation, size get contracted. Again you will remove 2 electron, again size get contracted. As size contraction increases, it is very difficult to remove the electron. किसी से 10 रुपए लेके बता दो, फर्स्ट टाइम दे देगा, दूसरी बार फिर थोड़ी देर बाद मांगो नहीं देगा, और तीसरी बार मांगो बिल्कुल नहीं देगा. ज्यादा मेहनत लगेगी. एक इलेक्ट्रॉन ले लो, दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने, एक दे दिया और दूसरा देने के बाद फिर थोड़ी देर बाद तीसरा भी इलेक्ट्रॉन दे दे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी. तो ये ट्रेंड हमेशा याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, तो ये वैल्यूज चेंज होती है. हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. I hope everybody is understanding. Yes. Okay. Now ionization enthalpy. Now next है electron affinity. Electron affinity. The energy required to gain one electron. और कोई एलिमेंट है, क्लोरीन है 17. अब इसमें ऐड करना है मुझे इलेक्ट्रॉन, ऐड कर रहा हूं मैं इसमें. तो देखो कोई भी है ऐसे चल रहे रास्ते से और कोई हमको दे दे, ले 500 का नोट ले ले. लेंगे क्या? नहीं लेंगे. स्मार्ट बच्चे नहीं लेंगे. हो सकता है उसमें कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो, और मुझे पकड़ के वो ले जाए, किडनैप कर ले, कुछ भी हो सकता है. See, to the point, please, to the point. मैं आपको बोर नहीं होने देता हूँ. डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल इसलिए देता हूँ आपको समझ में आए दिमाग में, लेकिन आप अगले ट्रैक पे मत जाइए. ठीक है. So whenever you will give the electron, the energy get releases. Energy release हो जाएगी, right? So that energy is nothing but electron affinity. तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन affinity. अभी आप बताओ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है और इसका ट्रेंड है, अपोजिट होगा ना? Yes, sir. बिल्कुल अपोजिट होगा. तो IE का ट्रेंड क्या था? IE का ट्रेंड IE3 लेफ्ट टू राइट क्या था? IE का ट्रेंड increases, top to bottom decreases. तो फिर
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होगा लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस ठीक है इंक्रीजेस देखो टॉप टू बॉटम increases and here decreases chlorine chlorine bromine iodine So in electron down the group increases and across the period increases. sorry Down the group it is हाँ ये सेम ही है ये सेम ही increases and decreases सेम ही है सेम ही increases and decreases ये कंफ्यूजन कैसे हुआ अच्छा हुआ कंपेयर करके देखो ये रिमूव करने की एनर्जी तो रिमूव करने के लिए एनर्जी ये क्या है ऐड करने की एनर्जी तो अगर हम लोग ये एलिमेंट लेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो किसमें हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं क्लोरीन में क्यों साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली अटैक कर लेगा ये साइज बड़ा है तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो यही रहेगा अब इसमें क्या रहेगा इसमें उल्टा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो उसमें अट्रैक्शन छोड़ेगा नहीं अपोजिट चीजें वही है लेकिन फोर्स अपोजिट हो जाएगा समझ में इधर भी वही रहेगा तो ये दोनों ये हमेशा याद रखना ये ट्रेंड सेम रहेगी हाँ ये डायरेक्ट ऊपर वाले ब्लू कलर के यस सर बस दोनों हो जाएगा सब ठीक है हुआ क्लियर नेक्स्ट next electronegativity we have time na yes 5 मिनट में खत्म कर दूंगा next slide. We have 8 minutes. electronegativity what is electronegativity when an atom accepts one electron and becomes electronegative. that is electron affinity we had Sir, seen gain of electron. gain of electron is reduction Sir, cation and another cation. listen if there is an element like carbon and chlorine right two elements you have carbon and chlorine That fraction of what type of bonding between them covalent bond. covalent bond. Yes. When this bonded pair of electron is shifted to one of the atom when this bonded pair of electron shifted to one of the atom means ये bonded pair of electron actual में ऐसे होंगे किसके पास क्लोरीन के पास तो यही जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की व्हाट Electronegativity. टू पुल और टू अट्रैक्ट bonded pair of electrons is nothing but electronegativity. Electronegativity. Left to right, top to bottom. Left to right, Top to bottom. increases, top to bottom, decreases. ठीक है? Yes. Chlorine, bromine, iodine. Which is most electronegative element? So chlorine. Chlorine. Chlorine is most electronegative element. Then sodium, magnesium, aluminium. Then Aluminium is more. silicon, which is most electronegative element. Sir, sodium. Silicon. Silicon. अरे increases ना. Increase होगी ना? Yes. Yes sir. Least is sodium. Good. Right? Yes. Now talking about periodic table, most electronegative element in periodic table. Most.
most electronegative element in periodic table is fluorine, value 4.0, and these values are discussed by Linus Pauling. ये साइंटिस्ट है, इसने पहले स्केल डेवलप किया. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, कोई डायमेंशन नहीं है, तो इन्होंने एक नंबर दे दिया कि चलो क्लोरीन ज्यादा है तो 4 दे देते, लाइक दैट, राइट. लिनस पॉलिंग 4.0, और cesium is the least electronegative element, their value is 0.7 periodic table. ये वैसा हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. क्लोरीन हर चीज में आ गया. क्लोरीन मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है. फ्लोरीन है. नेक्स्ट इज अ मास नंबर and atomic number. Atomic number and atomic mass number. Atomic number is denoted by letter Z, and atomic mass number is denoted by letter A. If we want to write the symbol of particular element, suppose the element is carbon, atomic number is a 6 and atomic mass is a 13, right? Isotope. Then what this indicate? This is atomic number, that is Z. This is atomic mass number, that is A, and this is symbols, right? If question asks how many number of neutron present in it, 30 minus 6. 30 minus 6. So what is atomic mass? 13 is atomic mass. Atomic mass is concentrated in a nucleus. Yes. So atomic mass is nothing but the number of proton plus neutrons, and atomic number is equal to number of proton, number of electron in a neutral condition. Electron के लिए neutral condition means अगर Na plus है और आपसे पूछा कि particular element in its positive condition having 10 electron, what is it atomic number? 10 ना? 10 कैसे? Number of protons is equal to number of electrons is equal to atomic. नहीं, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा. So number of, देखो ध्यान से सुनो, a particular element in its positive condition, unipositive condition, the number of electrons are 10. What is its atomic number? so unipositive means it has one positive. One charge. positive charge. Oh, okay sir. So 10 plus 1 11 आ गया. तो याद रखो ये हर जगह नहीं एप्लीकेबल होगा, ये न्यूट्रल कंडीशन है. yes sir. तो ऐसी कंडीशन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10. So 10 is not its atomic number. Its Yes, atomic 11. number is 11. so compound. Element must be neutral. Then number of proton and electron is matched. Proton never changes. Proton remains same Yes, sir. because it is in nucleus. But electron get changes. ठीक है? Next. नहीं, last concept हो जाएगा. 2 मिनट है. 2 मिनट. ठीक है, ये समझ में आया? Yes sir. एक बुक है, आई थिंक दलाल उल्टा दिया उसमें, गलत दिया है. दैट प्लीज डू नॉट फॉलो दैट. नहीं, सेलिना, इट इज नाइसली गिवन. यस, सी हियर डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 70. अल्कली एंड हैलोजन. क्या क्या डिफरेंस है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन Yes sir. 1, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 7. 7.
alkali metals, and these are halogens. Ionization enthalpy high. Ionization enthalpy low. Electron affinity high. Electron affinity low. Electronegativity low. Electronegativity high. Group 1 element reducing agent है कि oxidizing agent? Reducing Reducing agent. And group oxidizing agent. agent. If group 1 element form a compound with hydrogen, then what will be the compound? Hydrogen के साथ. Then metal hydride will form. This will Acid. acids will form. Metal combining with oxygen, metal oxides will form. Oxide. This combined with oxygen, non-metal oxides will form, which is acidic in nature, right? So ऐसे कुछ points याद रखिए. बस इतना है. That's all about this. One more thing. These are soft in nature. They are reactive, and they can cut with knife. And these are also highly reactive. ये भी reactive है. तो ये थोड़ा similarity हो गई. और बाकी एग्जांपल है NaCl, KBr, HCl, HR, etc. That's all about this chapter. Thank you so much. Okay. ये कितने चैप्टर हैं बताओ. 2 चैप्टर की क्वेश्चन और भाई मेरे को स्कूल में फिजिक्स पीरियड नहीं करते. हाँ क्या मुझे नहीं आता. सब कंफ्यूज हो गए हैं.